a warm welcome. I think we have 6 minutes each. So, 3 small poems. Namak is the first one I've chosen. नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। The other one is called स्त्रियाँ। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियाँ उड़ी और अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फैली फूली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन
आवारा महिलाओं का ही शगल हैं ये कहानियाँ और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़ी ही लिखी हैं। कनखियाँ, इशारे, फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। And the third one, the last one is called एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, गुप्त अंधेरा था कुएं का उसके भीतर भी। सारी दीवारें टटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाज़ा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बहरा तो अर्थ भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी, बाहर खड़े ही खड़े दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्र दल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डनलप पर लेटी, चटाई चुभी घर की अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटरदाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बाँची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम 2 पंक्तियाँ अलग अलग उसने कहीं। ऑफिस में खिंड बैठ अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे ये कहा, तुम हो सबसे ज़्यादा तुम हो प्यारे। ये तो सरासर है धोखा। सबसे ज़्यादा माने सबसे ज़्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। So I've now cleared the passage, and now you'll be listening to better poems. And you know that poems are of 2 kinds. Poems who, like the Unmesh Bhava of the creation, walk from the center to the periphery. I mean, from within, they walk out, they go out to the world. And then there are poems from the outward. They're called the Nimesh Bhav of Srishti, of the creation. And from the world, they walk gradually back to the core of your being. Now here in this galaxy, you have both kinds of poets. There are poets like Mani and Makarand, who walk, who write in the Unmesh Bhava. From the core, they go out to the world and then come back. And you know about Michelangelo, whatever the difference of Michelangelo or Rembrandt's painting would be, is the difference between these 2 kinds of poets. Now I'll be speaking to you about the difference only when Mani has read her luminous poems aloud to you. So Mani, welcome. She has the glitter of Mani in her poem because she's come back after a journey into the Himalayan range of experience.
And you'll see that for yourself. Anamika, thank you so much. I'm so honored to be here with all of you. Today, Anamika texted me saying that in my poetry, they're metaphysical with a pinch of salt. And I responded to her, ki, oi, they're like handfuls of salt. So, my first poem is called Waiting for Gold. And the reference is to the Golden Age. Every time something terrible happens, somebody says, oh, once upon a time we had a golden age, you know. You get the full list of Rishikas comes out, okay? And how wonderful it used to be. So this poem is inspired by that thought. Waiting for gold. Long, long ago, very, very long ago, when this star was in that constellation, men and women were equal. Cobbler could be king. According to Surya Siddhanta, the golden age will return when planets line up along the ecliptic in Pisces just before Aries on a new moon day in Falguni. Quote this poem then. The poem should be translated in Hindi as "Achhe din वापस आएंगे." Okay, my second poem is called Poem for a Librarian, and I thought it would be appropriate to honor librarians as well as the festival because it's all about books. Poem for a Librarian. Big library in our small town. So many floors and wings. We had 3 elevators and 5 stairwells. Books were stacked by subject. Where to put a book was my call. Art or architecture, classics or history, theology or religious studies, ask me. One ordinary day, a new book landed on my table called Female. Called Female, the cover said non-fiction. I put it under gynecology. I could not sleep that night, and the next day I moved it to anthropology. An hour later, decided it was genomics. This went on again, and again. Sociology, psychology, earth sciences. Then it happened. Inspiration is always sudden, and just as I was brushing my teeth, I nearly said it aloud, performing arts. Over breakfast, I told my wife what I was thinking. She hated it. Glinting, she said that I meant real estate. I know you want to know how this ended. So do I. My next poem is dedicated to my friend Rekha. I wrote it for her, thinking of her. And in the weeks after that, whenever I've shared it, especially with a woman friend, the response I've had has been overwhelming. They have said that it's about them. If it's any consolation, to you who loved and could not speak of it, lost something no one knew you had. To you who find yourself abruptly weeping in public with no legitimate
explanation. To you who told a friend who said, this too will pass, this did not, this carved a hole within your chest, there this lives and owns your face. To you who denied yourself and have no one else to blame, surrendered to bondage, thinking it your place. You went by the book, did not know better. That piety was false. It was too late. 2-minute silence. हर बार बजाने की जरूरत नहीं है. I should hire him, huh? Last poem. It's a poem I wrote after a visit to Kashi, especially to the Ghats, Manikarnika and Harishchandra. It follows the journey of a person, a body. Don't ask who is cooking tonight at Harishchandra and Manikarnika, holy confidential kitchens of Kashi. Shroud tears, skin sears, juicy fats oblation. Did marrow fizz, fire laugh? In 3 hours and a half, this human log collectible in a dustpan. For the first time, I think, to count your eyelashes, to pluck them before they're singed. Of each, I'll make a boat unmoored. Where in the worlds are you? As if I poured a sky of wax on you, everywhere you are not, your exact absence. In Uttar Kashi, where sun dives and pirouettes and fish roll their eyes, dodging tangled light doodles, we cup our hands and drink Ma Ganga, infused with arias of swans and undertones of glaciers. Sweetness rises, air floats sinless. In Kashi, where shadows hover anxious like dogs marking corners of terraced ghats. As lovers drink mirrors, a curly suit rains upon the free bereft. And pundits claim ashes still warm from midnight pyres for altar coffers at dawn. Hey Vishwanath of Kashi, O Mount Alchemy, here I am, weightless, now take me home. So long as mountains meditate, this river will be wet. So long as boatmen paddle, a lullaby for the dead. Before sun strikes and water turns cold, we row to a spot churning upstream, hand your ashes over to the current. Ash can't swim, hangs on to algae on hulls, falls into arms of corals, scraped and bitten by fish, shat along gorges and flats. Why else do river beaches shine? What is mica made of? So you've seen for yourself how she sang a lullaby for death, and what a metaphysical range she has, from cosmic to the commonplace, from personal to political, from levity to seriousness, as they call it technically. So that a range.
And that's why I call them luminous. And humor in her case is a great leveler, as great a leveler as death is. So now I'll take you to another place, a person, a very, different kind of a poet, Abhay K. He belongs to the other kind of poetry that I was referring to. But what is common about these two people is the sense of place. He has traveled all the world over as a diplomat, and on every, and he's merged landscapes and inscapes. So his poetry has a strong sense of place, and the sense of time radiates through his sense of place. So Abhay, over to you. Hello. Hello. Yeah. So I'm just going to continue with what Mani has already read. Death is an ocean. Life is a river. और तेज बोलूं? Okay. Death is an ocean. Life is a river. The river flows into the ocean. The river fears it will disappear. All its bends, mighty currents, all its glory will be gone. But that's how it is. The river cannot flow back to the plains and the mountains. It must flow into the ocean and become one with it, where the sun will work its magic and clouds will appear. The breeze will carry them to the mountains, where a new river will be born. I'm supposed to give subtitles here now, but I can't think of anything other than Naya Daur. Naya Daur. Okay. So I'm going to read you another poem. It's called The Fire and Sermon. The river's soul is slashed, its 5 fingers fractured and dammed with an imaginary border. The wind crosses back and forth the ancient land, unhindered. The scent has departed. Sweet Indus, flow gently till I sing again. The river bears no bloodstains, partition papers, silk flags, passports blue or green, or other remains of dark midnights. The scent has departed. And their successors, the drifting souls of the subcontinent, the departed have left only their words of wisdom. By the lost waters of Saraswati, I sit down and weep. Sweet Indus, flow gently till I sing again. Sweet Indus, flow gently, for I tread a rough terrain. I hear explosions in Pokhran, the split of the atoms, shock waves ripping the world apart. Violent storms blow through the desert, drowning villages and cities in sand. While I stroll at Bandra Bandstand on a hot summer
evening in Bombay. The desert shakes again, this time in Quetta, while I'm grazing a cow herd in Balochistan. Dust rises in the sky, turning the day into night, and the dry, hot winds from the desert destroys all the sunflowers from Peshawar to Kanyakumari. But from time to time, I hear talks of sunflowers being planted again, a new crop of similar kind, which will grow as fast and shine as bright. Oh, the sun shines bright in the desert, and there is no water. We drink only milk and eat only dessert. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhav bhavet. Ram, Ram, Sita Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Ishwar Allah, Tero Naam, Sabko Sanmati, De Bhagwan. Eternal city under the smoke of November noon, Mrs. Kaul, the civil servant, bright as a ruby in her finest sari, woven in Banaras by Banke Bihari, invited me gently in English to dine at the India International Center, followed by a luminous night at a five-star hotel. At the midnight hour, when the world sleeps turning and tossing in beds, when the humanity recuperates like a frog hibernating in winter, I, Lord Mountbatten, though blind, swinging across the subcontinent, partitioned with a pen on paper, can see at the midnight hour the sun setting over the British Empire, heading homeward as the sailor returns home from a sea voyage. It's tea time in London, time to make one's own breakfast, light one's own oven, and to open canned tin food of the vast empire over which the sun never set. What has been left? Souvenirs, loot, Kohinoor, and maps. I, Mountbatten, now an old man with a wrinkled skin, foresaw what was coming and left the scene. All awaited that expected moment. Nehru, the impatient man with the gift of gab, arrived, the last Englishman, Macaulay's true son, one of a kind the British could trust. Someone who could speak the language, a confidant. The propitious hour arrived at midnight. As he agreed, the Raj ended. India woke up from centuries of slumber for its tryst with destiny, but broken and limping, partitioned and bleeding, assaulted by invaders and tribesmen heavily armed, inviting immediate response that made a substantial difference. And I, the time, have foreseen it all, enacted on this same ancient land of Bharat. I have fought in Kurukshetra and Karnal, and walked among the dead after the great war of Mahabharat. I, Mountbatten, deliver my final farewell speech, and grope my way after the sunset to the sea. India heaves a sigh of relief and looks in the mirror, fully aware of its newfound freedom. Its numb, amputated body feels a streak of terror. It must move on. Now what's done is done. When even great men stoop to folly and commit despicable acts, partitioning the land, it wipes tears with its tender left hand and sobs silently alone at dawn. A new music plays in the Mughal gardens, and along the Rajpath,
of the Central Secretariat. Delhi, I can sometimes hear, besides a public monument at the India Gate, the pleasant sounds of the common people's choir and cooing and wooing of lovers under the moon, where the soldiers of India martyred in Mesopotamia, Persia, Flanders, East Africa, Gallipoli, and France shine in splendor. The Yamuna drains darkness from Delhi's soul with the downpour of monsoon. In August, the bloodbath, a sea of refugees at the Kingsway camp past the Delhi University. Baheguru, Baheguru, Ishwar Allah, Ishwar Allah. Baheguru, Baheguru. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा. On Siachen Glacier, I cannot link anything with anything. The frost-bitten bodies of my sons, my humble sons who expect nothing. Ram, Ram. To Rajghat then I came and saw the scent burning, 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 burning. Hey Ram, Hey Ram. सबको सन्मति दे भगवान. धन्यवाद. इतिहास के गलियारों के बाद तरह तरह की सभ्यताओं पर एक गहन मेडिटेटिव अंतः सलिला के प्रवाह के बाद अब हम अपनी धरती की ओर लौटते हैं, नंद भारद्वाज की ओर. मीरा की धरती से घिराइस बदरिया सावन की का जो नाद उठा था, उसके बाद राजस्थानी में और हिंदी में उसकी क्या अनुगूंजें उठीं, इसका आभास आपको इनकी कविताओं में होगा. हमारे पास अब 10 मिनट हैं, जिसमें मुझे और मकरंद को दोनों को शेयर करना है. मैं 5 मिनट ही लूँगा. मेरी कविताएं हिंदी और राजस्थानी दोनों में हैं, और जयपुर में बैठा हूँ तो मानकर चलता हूँ कि आधी ऑडियंस कम से कम राजस्थानी सीधी भी समझ लेती होगी. न समझ पाएंगे तो उसका थोड़ा सा अनुवाद भी आपको प्रस्तुत करूँगा. एक छोटी कविता पहले राजस्थानी में, फिर एक आध कविता हिंदी में आपको सुनाऊँगा. इंसान 2 चीज़ें तलाश करता है. एक तो अपनी ज़मीन, जिस पर पाँव टिकाकर खड़े रह सके और उम्र गुजार सके, और एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, जिसके लिए वो संघर्ष करता है और कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है. कविता का शीर्षक है शोध लीवी पृथ्वी, खोज ली पृथ्वी. थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणी रो काड़ो मेघ भेतो. थारा सपना में अवसर तो धारो धार, तिरसाई धरणी रो काड़ो मेघ भेतो. बावड़ तो मगरा तो थोती थड़ियारे मंझार, थारी जागती इंछावा सपना सार तो. अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, अब तो चिंदी चिंदी हो गई है मेरी इच्छाएं. अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, और मंगसी पड़ गई चवरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ. स्त्री जो सुहाग का चूड़ा पहनती है, उस पर एक रंग लगाती है जो मजीठ होता है, लाल. वो भी अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है. अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, और मंगसी पड़ गई चौरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ. पढ़ हिचकता आफड़ता लेकिन जद्दोजहद करते, पण हिचकता आफड़ता आपा आभे और पताल बिचे शोध लीवी पृथ्वी. हमने आसमान और पाताल के बीच पृथ्वी को तलाश कर लिया है जहाँ हम खड़े हैं. एक कविता है, कहीं तो होंगे अभयारण्य, ऐसे अभयारण्य जहाँ हम निश्चिंत होकर जी सके, एक लोकतांत्रिक सुख को अनुभव कर सके. जब उलट पलट गई हो सारी कायनात,
हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे साबुत। जब उलट पुलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियाँ प्रजातियाँ कौन कौन सी रह गई होंगी शेष इस अशांत बियाबान में। सूक्ष्म जंतुओं की नियति को अगर मान भी लें, छोड़ दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीर ने संवारने को बच रहे होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। इस सामने दिखते घायल बरगद की छाँव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा। इस घायल बरगद की छाँव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा, जिसे पुरखों ने बड़े चाव से उगाया था बस्ती के बीचों बीच। ऐसे न जाने कितने दरख्त उखड़ कर बह गए होंगे समय के टूटते प्रवाह में। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ, जब सारे हल्के में कहर मचा होगा। वे उड़ते रहेंगे क्षितिज के आर पार, जहाँ हरे भरे खेत होंगे, लहलहाती फसलें होंगी, ढलानों पर दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली। कहीं तो होंगे अभयारण्य, दुर्लभ पक्षियों के समूह। अचानक उड़ जाने का अनचाहा एहसास इस रूखे सूखे दरख्तों की देह में। ऐसे ही आएगी बहार, ऐसे ही गुजर जाएगी समय की बेरहम दुश्वारियाँ। और एक अंतिम कविता मकरंद के लिए 5 मिनट छोड़ते हुए। पीढ़ियों का पानी। ये जो हम मनुष्य हैं ना, भारतीय लोग, ये जीवन की निरंतरता में विश्वास करते हैं। कुछ भी नष्ट नहीं होता पृथ्वी पर। जितने चीज़ें दिखाई देती हैं वे रूप बदलती हैं, लेकिन यहीं रहती हैं। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित पुरखों की आदिम ऊर्जा। मेरे ही तो सहोदर है ये दरख्त ये वनस्पतियाँ, मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियाँ। मेरी आंखों में तैरते हरियाली के बिंब, अनगिनत रंगों में खिलते फूलों के मौसम। अरबों प्रजातियाँ जीवधारियों की खोजती है मुझ में अपने होने की पहचान। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। धन्यवाद। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। इसी सनातनता की प्यास हमारे मकरंद जी की कविताओं में भी मिलती है। गांधी, विवेकानंद दर्शन और महर्षि अरविंद का दर्शन। When philosophy flowers into poetry, what happens? You can smell for yourself. जी कह रहे खड़े हो जाइए। आप लोगों को क्या लगता है? सिट सिट और स्टैंड स्टैंड? स्टैंड स्टैंड। The last one left standing. But thank you all so much. It's such an honor and such a pleasure. Thank you Anamika ji. And अभी नंद जी ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने सृष्टि के निरंतरता की बात कही। उसी तरह शब्द भी निरंतर है और इसी शब्द के अक्षर भाव को हम लोग साक्षर करने की कोशिश करते हैं, जो कवि होते हैं वो। तो आप सबकी इजाज़त के साथ कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ। This is my 7th book of poems. It's called Identity's Last Secret. And the publishers have a stall in Darbar Hall. So they've told me to bring this to your attention.
Actually, I'm very grateful to them because it's a difficult book to publish. It's a book of poetry, criticism, philosophy, art, and it also has a modern tantra in it, okay? So if you're curious, go take a look. So I'll just read a few lines from this, if you don't mind. What is so important that it has to escape detection? What is so important that it has to escape detection? Isn't it identity's last secret? What remains so tenaciously hidden that it insistently cries out? What remains so tenaciously hidden that it insistently cries out? What ends up showing in every action, surreptitiously rearing its head in each spoken word? The more it is hidden, it hits you all the more in your face. What is this? It is what we call the enigma of the wound. The lesson and the secret of the wound. The wound is still unguarded, bare. It is a secret path, like a trail of blood. The missing part, the most private, yet the most exposed, is the wound. Gash, slit, cavity, dip, abyss, or yawning void. The wound is also an opening. Beckoner to the beyond, it can lead back to the source. More than secret, sacred rituals, more than protestations and vows, it is the wound that leads to reunion. Only the mistress or the wizard of the wound can heal both the wounder and the wounded, both the self and the other. Only she or he deserves the title Chakravarti, conqueror. His wound gave him access, like another language learned but forgotten, written in the alphabet of pain. Not visual but tactile, like Braille. He has to read the welts on his flesh, the marks where she had carved her initials, keeping score of her victories, his pain, her gain. He has to rewrite the script, find out how no longer to be the bondsman of pain. The wound itself knows identity's last secret, how to heal, be whole and holy. Victim at first of the sorceress of innumerable enchantments, then long-serving apprentice, finally how to become master of the wound, himself wizard and healer of heartaches. And the final excerpt. The wound leads back to love, even as it leads away from it. The wound leads back to love, even as it leads away from it. We, the wounded, are not accursed. We, the wounded, are not accursed, while the others, unblemished, remain in a state of grace. The wound marks us, but we are not marred by it. The wound, our sigil, the symbol of our difference, is all that we have. It is nothing to crow about. It is no scarlet letter, but the red badge of courage. It is how we are bound to the beloved. It is our way back. We are wounded, but we are also the blessed. Thank you so much.